गुड इवनिंग एवरीवन। तो यही क्लास बची थी आई गेस। इस क्लासरूम में नहीं आए थे आप लोग ना, इस बिल्डिंग में, लाइक IAPL बिल्डिंग 33, देन राजेंद्र प्लेस एंड दिस। सारे क्लासरूम्स देख लिए आप लोगों ने, कौन सा सबसे अच्छा लगा? ये वाला। हम्म। ये वाला बैकग्राउंड ठीक है? ओके। Abhishek has asked one question. If 18 birds make 18 nests in 18 days, then one bird will make one nest in how many days? One question is being asked. See this question? 18 birds, they make so we have birds, nest, and number of days. 18 birds, 18 nest in 18 days. So one bird, one nest in how many days? 18 birds make 18 nests in 18 days. So one bird will make one nest in 18 days ki 1 days. 1 days वाला आंसर आ रहा होगा खुद। Abhishek, what answer you were getting? इसका आंसर क्या होगा? Why 18? एक आ रहा था? Like why not one? 18 bird, 18 nest, 18 days. तो one bird, one nest, one day. ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? But 18 bird, 18 nest in 18 days. 18 people, 18 bird, they are making 18 nest in 18 days. ये तो वैसा क्वेश्चन है, फूफा जी वाला क्वेश्चन। So one bird will make one nest in 18 days. अब बर्ड नेस्ट कैसे बनाती है? It will take some time. So one bird taking 18 days. शुरुआत किया 18 बर्ड्स ने बनाना नेस्ट। फर्स्ट डे थोड़ा सा बनाया सबने, थोड़ा थोड़ा। सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 18 डे पे सारे 18 ने अपने एक एक नेस्ट बना लिए। दैट मीन्स 18 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन वाज दिस कि 18 बर्ड, 18 birds make 18 nest in 18 days. So one bird will make one nest in how many days? 18, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। ये तो ऐसे ही हो गया क्वेश्चन, लाइक कि वी हैव अ साइकिल, एक का बड़ा पहिया एक का छोटा पहिया है, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम करोल बाग टू हौज खास। From Karol Bagh to Hauj Khas, this wheel has covered 11 kilometers. So what distance this wheel will cover? ये तो बड़ा है पहिया लेकिन
The same distance this will cover. Revolution will be different. तो today ratio वाला topic is clear. Ratio वाला तो कर लिया था सारा. Now we can start mixtures. Mixtures. तो मिक्सचर्स वाला टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने. हैव यू सीन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक मिक्सचर? सो मिक्सचर में बेसिक कॉन्सेप्ट से वी कैन स्टार्ट. लाइक वी आर हैविंग टू कंटेनर्स in which we have like these two containers of equal quantity, we can say 100 liter 100 liter, 30 30, 50 50. This way these two containers are there. In this container we have milk and water 4:3. In this container milk and water 3:2. If they are mixed in equal quantity, like 1:1 के ratio में they are mixed, then what will be the ratio of milk and water in resultant mixture? So we have one container, another container, same quantity, they are mixed in another container. So what will be the ratio of milk and water in this mixture? This we need to so how we can proceed in this question, in these type of questions? Like this container and this container, same quantity. Isme some milk is there, some water is there, some milk, some water, and these things are mixed in this another container. So in this container, the total quantity of milk will be sum of this milk and this milk, and also the quantity of water will be sum of this and this. So if we calculate ki what milk is coming here in this container and what water is coming in this container, uska ratio nikal liya, aa gaya answer. So the quantity is not given, but it is given ki they are of same quantity. So what we can do, we can assume something like 100 से we can assume कि 100 liter यहाँ पे है in this container also 100 liter. So 100 liter में we can calculate कि what is the quantity of milk, what is the quantity of milk here, उसको add किया, that will be the quantity of milk here. क्योंकि बाहर से we are not adding anything, यही चीज़ आ रही है. So अगर if we calculate 100 में 4:3 के रेशियो में milk and water है, so what will be the quantity of milk? 100 into 4 by 4 plus 3, 7. So here we are getting in fractions. यहाँ पे भी if we calculate milk की quantity, तो 100 into 3 by 5. यहाँ पे fraction में नहीं आ रहा है. So what we can do in these kind of questions? इसको तो sum करना पड़ेगा. If we are taking sum, then we need to take LCM of 7 and 5. तभी फिर ऐड करेंगे दोनों को. तो इससे बेटर है what we can do in the first step. In the first step itself, we can take the LCM of these two numbers. 4 plus 3, 7. 3 plus 2, 5. 7, 5 का LCM is 35. So we can assume कि first container and second container, here we have 35 liters, here also we have 35 liters. Then ठीक है. So here what will be the quantity of milk? 35 multiplied by 4 plus 3, 7. ये कितना आ गया? 20 liters. Here what will be the quantity of milk? 35 into 3 by 5, 21 आ गया. So these things
Like 20 liter milk is coming from this container, 1 liter milk is coming from this container. तो यहाँ पे milk की quantity क्या हो जाएगी? 20 plus 21, 41. And in this container, what will be the total quantity? 35 from here, 35 from here. Okay, I will explain. 35 from here, 35 from here. Total 70. Out of 70 liters, 41 is milk. So remaining will be water only. कितना हो जाएगा water? 70 minus 41, 29. So this will be our ratio of milk and water. Milk and water. So mixture वाले question में, if this quantity total is not given, we can assume this way by taking LCM. So why we are taking LCM? Because if we are taking 100, so what is happening? This quantity we are calculating, agar 100 if we have assumed here, so 100 into 4 by 7, 400 by 7, liters will be milky quantity from the first container. Second container say 100 into 3 by 5. We are getting 60 liters from the second container. So this and this, these are the quantities of milk. ये दोनों आ रही हैं इस कंटेनर में. So we can add them. 400 by 7 plus 60. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे LCM तो लेना ही पड़ रहा है. 7 1 का LCM 7 आ रहा है यहाँ पे. तो 60 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको तो 100 into 3, 300 by 5 लिख सकते हैं. तो 5 and 7 का LCM लेना पड़ता, और 7 और 1 का LCM लेना पड़ रहा है. So it's better initially we can take LCM so that we get a number such that that number can divide like 7, क्योंकि इसका sum ये denominator में आएगा, तो इससे this number divide होना चाहिए. 35 ले लो, 70 ले लो, 105 ले लो. This way any number we can take जो ये 7 को divide कर सके. 4 plus 3, 3 plus 5, 3 plus 2, 5. That is why we are taking LCM in the first place. Then we are assuming what will be the number here, not 100, just because of calculation. जिससे calculation थोड़ा simple हो जाए. The only idea is this. So this understood by everyone? अभी दूसरा question इसी logic पे करते हैं. Like we are having, this is the first variation we can say mixture में. Suppose we are having 2 containers. Same quantity, 1:1 के ratio में they are being mixed. Milk and water. Milk and water. This is 4:5 and this is 3:2. If they are mixed together in another container, what will be the ratio of milk and water? ऐसे ही कुछ आएगा. शुरुआत से देखा था ना? You got the idea? नहीं? अभी नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा? Okay.
Try to understand this question first. क्या आ रहा है आंसर? 47, 43 इतना ही आ रहा है. 47, 35. Tw- 47. Okay. Okay, so this is the question. कि there are two containers. Both the containers are of same quantity. Same capacity है दोनों container की, same quantity है, same quantity of liquid it can come here. They both are mixed together, the liquid in it, in another container. First container में it is given कि milk and water का ratio is 4:5. Second container में we have ratio of milk and water 3:2. They are of same quantity, they are mixed together in another container. The question is what will be the ratio of milk and water in this container? This is the question. So how we can proceed in these kind of questions? Like no amount is given, no quantity is given, only ratios are given. So we can assume something कि this container में total liquid is coming like 100 liters, 100 liters. This way we can assume 50, 50, 200. Some numbers we can take. If some number we are taking कि 100 liter के containers. So we can calculate कि in this container what is the total quantity of milk. This we can assume. This we can calculate. What we have assumed 100 liters. मान लो if we have assumed कि total quantity is 100 liter, this is again 100 liters. ठीक है? So if we are assuming this way, so we are going to face some problem in calculation. 100 में 4:5 के ratio में they are mixed. So what will be the quantity of milk? 100 into 4 by 4 plus 5. So 100 into 4 by 9. This will be the quantity of milk. Then in the second container, what will be the quantity? ये भी 100 liter का है. 100 into 3 by 3 plus 2. 100 into 3 by 5. So milk की quantity we have calculated की exact quantity of milk. If we are mixing them, so milk is coming from these two containers only. We are not adding anything extra from anywhere, just these two containers. So milk की quantity in this container will be this 100, like we can say कि 400 by 9 plus this is 300 by 5. This is the quantity of milk. 400 by 9, 300 by 5. This is the quantity of milk. Total quantity क्या हो जाएगी यहाँ पे? 100 plus 100 इस कंटेनर में 200 liters. तो 200 में से if we subtract this, we can get quantity of water. वही रेशियो आ जाएगा milk is to water का. But इसमें what we are seeing कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है. Why? Because fractions में numbers are coming. So what we can do? We can take, यहाँ पे अगर ये प्लस करेंगे तो 9 and 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा. 45. So initially itself we can take LCM. Then assume numbers. 100 नहीं, will assume the LCMs. क्या कर सकते हैं? What we can do? First step में यही जो LCM 45 आया इसको will assume कि this is the quantity of container. So first step में 4 plus 5 9, 3 plus 2 5. 9 and 5 calcium is 45. So we can assume
कि this is not 100 liter, this is 45 liters. This is 45 liters. This is also 45. Now we can calculate कि what is the milk की quantity. 45 into 4 by 45, 4 plus 5, 9. ये कितना आ गया? 20. In first container, milk quantity in second container, 45 multiplied by 3 divided by 3 plus 2, 5. So in this container, what will be total milk की quantity? 20 plus 27, 47 आ गया. Then total will be, total quantity in this container, 45 plus 45, 90. 90. So remaining will be water only. So 90 minus 47, what we are getting? 43. So this will be our ratio of milk and water in this container. In this container. Clear? Huh? Okay. So this is the first variation, when they are mixed in equal quantity. Second variation we can have, when we are having two containers of same quantity, first, second, इसमें milk and water के place पे you can write anything, कुछ भी लिख सकते हो, liquid होने चाहिए, और metal also we can write. तो mixture और solution में there is some difference. Mixture and solution, what is that difference? साइंस में पढ़ा होगा. So chemical composition पे क्या होता है, उससे कुछ difference we can derive. Mixture में अब milk and water है, mixture में milk and water, this is also a mixture, milk and water का. And solution में, तो इसको पढ़ना कि what is the difference between mixture and solution, कैसे differentiate कर सकते हैं, chemistry से निकालना. यहाँ भी तो दो चीज मिक्स कर रहे हैं. Solid, but this is milk and water, this is liquid. Okay, इसको सोचना कि what is the answer for this. But in CSAT के पेपर में mixture solution something is कुछ भी आ रहा है, उसको mixture ही treat करेंगे ऐसे, ठीक है. So first container, second container, here 1:2 का ratio है milk and water, and here we are having 3:2 का ratio. If we are mixing these two containers in 1:2 का ratio, then what will be milk and water का ratio? आ गया? Okay, then what is the answer? सबको पता चल जाए. अच्छा, इसका आंसर आ गया. Mixture and solution का difference. What is that difference? So milk and water से milk and water you can separate.
Okay, so you have tried well. ठीक है. So the question here is, we are having two containers. First container में milk and water का ratio is 1:2. Another container में milk and water का ratio 3:2. They are mixed in the ratio 1:2. 1:2 के ratio में they are mixed in another container. So in this container, what will be the ratio of milk and water? This we need to calculate. The same way we are going to start. कैसे start करना है? कि first we are going to take LCM. First step में LCM लेंगे 1 2 1 plus 2 का 3 और 3 plus 2 5 का. ऐसे start करना. Then start कि 1:2 के रेशियो में. Earlier क्या था? 1:1 के रेशियो में we were mixing them. Now we are mixing them in 1:2 का रेशियो. So if we are taking this like 35, so this will take 70. तो 35 में कितना मिल्क है? 70 में कितना मिल्क है? Same process we are going to repeat. तो मिक्सचर वाला ही टॉपिक we have started. इतना आ रहा है? So this way, like mixture से 1 or 2 questions, like 22, 21, 20 में 1, 2, 1, 2 question has been asked. One question we can say, one question. लेकिन this year, no question was asked. This mixture वाले topics. Sorry? 17:13. This way it is coming. So different answers I am getting here. 7:8. So what process did you follow? LCM wala. Okay. So let me solve it. So what we can do, like this first step में 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5. LCM कितना आ जाएगा 3 and 5 का? 15. So we'll assume कि this container is of 15 liters and this container 1:2 के रेशियो में we are mixing. So ये हो जाएगा इस कंटेनर की क्वांटिटी 15 into 2, 30 liters. ठीक है. अब इसमें what is the quantity of milk? मिल्क की क्वांटिटी हो जाएगी 15 into 1/3. कितना आ गया? 5 liters. सेकेंड कंटेनर में what is the milk की क्वांटिटी? 30 into 3/5. ये कितना आ गया? 18 आ गया? 18 liters. So these two containers, they are mixed together. So in this resultant mixture, what will be the quantity of milk? Milk यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है. That means 5 from this container and 18 from this. तो milk की quantity क्या हो जाएगी? 18 plus 5, 23. 23 is milk. इस कंटेनर में what is total quantity? हम वाटर की भी the same way we can calculate कि 15 into 2/3,
and 30 multiplied by 2 by 5. This way we can calculate, लेकिन जरूरत नहीं है. We can simply 15 plus 30 कितना हो गया total? So 45. तो total quantity है 45 liters. Out of this 23 is milk. So remaining will be water. कितना हो गया? 45 में से 23 गया 22. 1:2 नहीं देखा था. अच्छा. वैसा क्यों किया था? हाँ, ऐसे नहीं करना है, रेशियोज को चेंज नहीं करना है. इसको विल नॉट टच, इसको विल नॉट टच. विल सी कि व्हाट सम इज कमिंग, उसका एलसीएम विल टेक, और उसकी हेल्प से विल कंसिडर, विल अज्यूम कि व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी. यहाँ पे जैसे अज्यूम कर लिया 15. अब यहीं पे 1:3 है, तो विल टेक 15 एंड 45. यस. 30. Sorry, so you have taken this quantity as 30. 10. Okay, let me understand it. So this ratio is given, how you have started, what is the total quantity for this? LCM 15, yes. Okay, so 15 में 2 से multiply किया. So this is 30 total. नहीं, ऐसा नहीं लेना है. Why? Because if you are taking 10, तो 10 into 1/3. Again we are getting in fractions. So this exercise we are doing only because of this, कि this milk की quantity must come in whole numbers. That is why we are taking this LCM. जिससे ये milk की quantity जो है ना, that must come in whole numbers, not in fractions. अगर ऐसे consider करोगे तो again we are getting in fractions. तो उसमें calculations में differences हो सकते हैं. Clear? ठीक है, ये आसान है. Understood? ठीक है, आ गया था सही आंसर. वेरी गुड. ओके, सो दिस इज द सेकंड वेरिएशन वी कैन से. फर्स्ट वेरिएशन में 1:1 था, सेम क्वांटिटी. हाँ, नहीं 1:1 में वी वेयर मिक्सिंग. दैट मीन्स इफ वी आर टेकिंग 15 liters of this container, 15 liter of this container, 15 into 15. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. अब ये समझ में आ गया तो इसका आंसर आ जाना चाहिए. आई थिंक ए एंड बी आर, नहीं ऐसे लिखो, देर इज वन कंटेनर. चलो ये मिल्क एंड वाटर. चलो ए एंड बी आर टू एलॉयज, ए एंड बी टू अलॉयज के बारे में पता होगा. कौन कौन सी हैं? गोल्ड कॉपर के होते हैं अलॉय. बिल्कुल. सो ए एंड बी आर टू अलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर. गोल्ड एंड कॉपर, तो मतलब ए में भी गोल्ड एंड कॉपर है एंड बी में भी गोल्ड एंड कॉपर है. IUPAC नेम क्या होता है गोल्ड एंड कॉपर का? IUPAC नेम होता है ना केमिस्ट्री में. Cu फॉर कॉपर एंड फॉर गोल्ड Ag सिल्वर होता है. अच्छा, क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इस पे ये सोचते रहना. सो A and B are two alloys
of gold and copper prepared by mixing the metals in the ratio 5:3 and 5:11. 5:3 and 5:11. Equal quantity of these alloys, A and B, are melted to form a new alloy C, full stop. Find the ratio of gold and copper in the third alloy C. 5:3 है, 5:11 है, ठीक है. AU किसका होता है? गोल्ड. यही पूछा है. Everyone is getting answer? कितना आ रहा था? 15:2. Okay. The same way we are going to start, same steps, first, second, third. So first step में we are going to take LCM. Equal quantity में they are getting mixed. आ रहा है answer? What is the answer? 17. So आ रहा है? कैलकुलेशन में थोड़ा सा देखते हैं. So try to see where you are doing mistakes. Like calculation में हो सकता है कुछ mistakes we are doing. So how we can start? Like 5:3, 5:11. This ratio is given. First step में we are going to calculate 5 plus 3, 8, 5 plus 11, 16. 8 and 16 का LCM will be 16 only. 16. So we'll say कि 16 units A का, 16 units B का we are taking, and will calculate कि in this A what is the how many units of gold are there. 16 into 5 by 8 कितना आ गया? 10. In this गोल्ड की यूनिट्स कितनी है? 16 into 5 by 16, 5. So gold 10 units from A, 5 units from B, it is coming here. So 10 plus 5, 15. And here total units are coming 16 plus 16, 32. Total 32 units are coming. So 32 minus 15 will be the कॉपर की यूनिट्स. तो कितना आ गया ये? 17. So with these 3 steps we are getting the answer. आंसर आ जाएगा ऐसे 15:17 आ रहा है आंसर. ठीक है.
Then there is another variation. Write down this question. ठीक है. In a 100-liter mixture, of milk and water, 100-liter mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 3:1. 3:1. Full stop. How much water should be added? How much water should be added in this mixture so that new ratio becomes 1:3. New ratio becomes 1:3. So here 100-liter का container is there, 100-liter milk and water का mixture is there, 3:1 के ratio में they are mixed. In this mixture we can see कि milk is more, water is less. What is happening? We are adding some water. If we are adding some water in this mixture, so this mixture में ratio becomes 1:3. 1:3. So the question is कि how much water we are adding to get this ratio. 25 आ रहा है? देखना पड़ेगा. 1:3. 50 ऐड करना पड़ेगा. 60. 50 पक्का. See here. So we can calculate, we can understand this question this way कि like milk and water 3:1 का ratio है. We can calculate कि what is quantity of milk here, what is quantity of water here. We can calculate this. अब जो resultant mixture we are getting, उसमें milk की quantity तो same ही होगी जो इसमें है, because we are not adding any more milk. We are not adding any more milk. What we are adding? We are adding water only. We are adding water only. तो ये 1 वाला जो part है, ये तो same ही रहेगा इसका. But यहाँ पे we are adding something जिससे कि ratio is coming 1:3. See here, what is milk की quantity? Milk की quantity क्या हो जाएगी? 100 into 3/4. कितना आ गया? 75. वाटर की क्वांटिटी, वाटर कितना है मिक्सचर में? 100 मतलब 25 ही है. 25 लाइक 100 लीटर मिक्सचर है, उसमें 75 लीटर इज मिल्क, रिमेनिंग विल बी वाटर. 25 लीटर्स. ठीक है. तो ये जो रिजल्टेंट मिक्सचर वी आर गेटिंग, इसमें मिल्क की क्वांटिटी विल बी 75 ओनली. सो व्हाट विल बी वाटर की क्वांटिटी? 1:3 के रेशियो में है. दिस इज 75, तो दिस विल बी 75 into 3. कितना आ गया? तो बढ़ने देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मिल्क इज टू वाटर 3:1. हाँ, इस वाले में दिस इज द इनिशियल मिक्सचर. सो 3:1 के रेशियो में है. सो मिल्क की क्वांटिटी इन दिस मिक्सचर 100 into 3/4, 75. अब यहाँ पे 1:3 का रेशियो है मिल्क एंड वाटर का. वी नो कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 75.
तो ये 1:3 का रेशियो है, तो ये 3 टाइम्स होगा इसका, 75:75 इंटू 3, कितना आ गया? 225. So initial water was 25, final water 225. So how much water we have added? यहाँ से in this mixture, सी फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से देखो, फिर एक बार फिर से देखो आराम से, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। दिस कंटेनर, इसमें दिस इज 100 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर 3:1 के रेशियो में, क्लियर? अब 3:1 के रेशियो में कैन वी कैलकुलेट व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मिल्क, एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर? कैन वी कैलकुलेट दिस? ये तो हो जाएगा। सो मिल्क की क्वांटिटी इस कंटेनर में 100 इंटू 3/4 कितना आया? 75। वाटर, रेस्ट वाटर होगा 25। So what is happening in this mixture? We are adding water. We are adding some water. After adding water, the ratio of milk and water becomes 1:3. 1:3. अब ये जो मिक्सचर है, इसमें तो मिल्क कुछ हमने ऐड किया नहीं, मिल्क विल रिमेन सेम 75, वाटर वी आर एडिंग, तो वाटर ऐड कर रहे हैं, तो 1:3 में दिस इज 1 पार्ट, दिस इज इक्वल टू 75, तो 75 इज टू सम नंबर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3 आना चाहिए ना। सो दिस नंबर विल बी 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 दैट मीन्स 225। उससे क्या फर्क पड़ता है? दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, क्वेश्चन में इट इज रिटन कि वी आर एडिंग सम वाटर। लिखा होता तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तब तब देयर विल बी सम अदर इश्यू, इफ वी आर एडिंग लेस वाटर, लाइक मिल्क ज्यादा था वाटर कम था, नहीं नहीं, so this way 1:3 का ratio we cannot get, we cannot get 1:3 का ratio, then we need to take out milk also, then only we can get this ratio। तो इसमें nowhere it is written कि this total quantity will remain 100। so अब 2 to 5 liter water is there in this final mixture, initial mixture में 25 liter water was there, so water added 200, 225 minus 25, 200 liters, 200 will be our answer। ठीक है, added water will be 200। ठीक है, आसान है? नहीं आसान नहीं है, सिंपल है, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में वी नीड टू सी। नाउ विल सी दिस क्वेश्चन। परसेंटेज एंड रेशियोज मिक्सचर्स वाला एप्लीकेशन है यहाँ पे। So there is a milk sample with 50% water in it. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। लाइक हियर इट इज रिटन देयर इज अ मिल्क सैंपल, देन दे आर राइटिंग कि 1/3 ऑफ दिस मिल्क, सो दिस मिल्क इज दिस सैंपल, दिस मिल्क इज नॉट प्योर मिल्क। बस ये थोड़ा सा समझ लो, फिर उसके बाद ट्राई करो।
इसमें भी no amount, no quantity is given anywhere, so we can assume something. But 100 assume करना मुश्किल होता है mixture के questions में. So assume something so that you can get 1/3, निकाल लो उसका, तो वो आए numbers में, whole numbers में. Like you can start with 150. And after then, we need to calculate percentage. $25 आ रहा है? कैसे? हाँ हाँ, that is also okay. Please shorten the font size. अच्छा, ऐसे दिख नहीं? अच्छा, अभी इससे ज़्यादा नहीं होगा आई गेस. हाँ, 40 है. 25 आ रहा था अभी, अभी 40 आ रहा है. Anyone? $25 आ रहा है. $25. So this way, 25 I think it is the correct answer. इसीलिए क्वेश्चन पेपर में when we OMR शीट पे जब बबल भरते हैं, तो भरते वक्त we think कि यार it is not C, it is D. अभी दिमाग में स्ट्राइक किया. And maximum time what happens कि वो गलत ही होता है. See here, there is a milk sample with 50% water in it. If 1/3 of this milk is added, so we can say that there is a milk sample of 150 liters. Why we are taking this 150 liter? Because in the question it is asked 1/3 of this milk. अगर 100 we are taking, so it will be 100/3, तो fraction में आ जाएगा. That is why we have considered कि it is 150. So 150 liter milk sample is there. Of this milk sample, one third of this milk, 50 liters, is added to equal amount of pure milk. 50 liter of pure milk. No water is here. And in this 50 liter, we have 50% water in it. So milk 25 and water 25. ठीक है? They are asking then water in the new mixture. So this is new mixture we have. ये अपना new mixture है. In this new mixture, milk कितना है? 25 plus 50, 75. Water कितना है in this mixture? 25. Total quantity कितनी है? 100. What are they asking? Water in the new mixture will fall down to. Water in the new mixture will fall down to 25 by 100 into 100. Percentage के बारे में they are asking 25%. So water in the new mixture will fall down to 25%.
25%. 25 वाटर डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी 100 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग 25%. तो देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन, 2 लिखा है, अगर यहीं पे लिखता विल फॉल डाउन बाई, तब डिफरेंट हो जाता है आंसर कि सेम रहता है? ये फॉल डाउन 2 वाला पहले समझना है, ये समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, ये 25% क्लियर. इफ आई आस्क कि वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन बाई, इनिशियली जो मिल्क सैंपल था उसमें 50% वाटर था, 50% वाटर था पहले, फाइनल इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू इज 25% डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू 50% मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ गया? 50%. अरे वैसे भी वी कैन सी कि पहले 50% था, नाउ इट इज 25%. कितने से फॉल डाउन करा? बाई 50%. 50 का 50% इज 25. तो फॉल डाउन बाई इफ दे आर आस्किंग, सो आंसर विल बी डिफरेंट. यहाँ पे लिखा है विल फॉल डाउन 2, तो आंसर विल बी 25%. ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट? ठीक है. Then we can see one more concept. We are having a container. इस कंटेनर में we have 80 liter water. 80 liter water is there. In first go, 8 liter of this liquid, that means water, is going out, and 8 liter of milk we are mixing in this mixture. Same quantity is going out, same quantity is coming in, but water is going out, milk is coming in. Then again we are having a mixture of water and milk. अब इस this mixture से again 8 liter of this mixture milk and water होगा इसमें. It is going out, again 8 liter milk is coming in. ठीक है. Then what will be the quantity of water left or remaining water in the mixture we need to calculate. This concept पे UPSC has asked questions, asked कर चुकी है, पूछा है इस पे. So how we can go for this? Step by step we can do. Like we have first go में water कितना है? 80 liters. Then what is happening? 8 liter water is going out. So remaining water will be, कितना आया? 8. 80 लीटर वाटर था, रिमेनिंग वाटर 8 liter water is going out, so remaining water will be 80 minus 8, 72 liters. 72 liter water. अब 73rd step में what is happening? कि water is 72 liters, इतना ही बचा है. 8 liter milk is added. So mixture we are making, इस mixture का ratio क्या होगा? 9:1.
9:1. Nine is to 1. Then what is happening? इस mixture का 8 liter is going out. We are interested in water. कि what amount of water is left remaining? 8 liter of mixture is going out. So in this mixture, what is the amount of water which is going out? अब 8 liter water तो नहीं जाएगा बाहर. That will be less than 8 liter. So what will be that amount? 8 liter milk and water, they are in the ratio of 9:1. Water and milk. So water का amount क्या होगा quantity? 8 into 9 by 10. कितना आ गया ये? 7.2. So 7.2 liter water is going out. So remaining water after this step क्या हो जाएगा? पहले कितना बचा था? 72 minus 7.2. कितना हो गया ये? 64.8. This will be our answer. 64.8. After this, what is happening? 8 liter milk is coming. Water तो रहेगा ही जितना बचा है. So we are getting answer as 64.8 liters water is remaining. Step by step we have taken. Yes? Okay. अच्छा. 72 minus 7.2. Good. Understood? So here the process is getting repeated or water is going out. I mean liquid is going out how many times? Twice. Twice it is going out. 8 liter एक बार गया. आ कितनी बार रहा है? Same number of times. So 2 times it is going out, 2 times it is coming in. If I ask this way, कि this process is getting repeated, यहाँ पे 2 times it is repeated. If I ask कि this process is repeated 5 times, then it will be difficult to calculate. कहीं न कहीं मिस हो जाएगा. Okay. ठीक है. ये समझ में आ रहा है? There is one formula for this. उसको we can apply. ठीक है, आगे बढ़े. ऑनलाइन इज वर्किंग फाइन ना? ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ठीक है. ओके. ये समझ में आ रहा है? 64.8. In the third step, 8 liter mixture was removed. So why did you take 72 liter as total water in last step? See, we are interested in water only. Total mixture तो 18 liter ही है. What is happening? Initially 18 liter water was there. 8 liter water is going out. 8 liter milk is coming in. So what will be the remaining water after this process? 80 minus 8, 72. 72 liter water is there and 8 liter milk is there. Total 80. So whatever the quantity which is going out, उसमें मिल्क एंड वाटर इसी रेशियो में होंगे. 70:8, 9:1. सो 8 लीटर मिल्क एंड वाटर का रेशियो इज गोइंग आउट. तो इस 8 लीटर में व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज गोइंग आउट? हमें वही निकालना है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज गोइंग आउट. तो वाटर की क्वांटिटी आ गई 7.2. सो इस 8 लीटर में 7.2 लीटर वाटर इज गोइंग आउट और रिमेनिंग
मिल्क होगा. So till here we have 72 liter water, 8 liter milk. After this process what is happening कि 72 liter water में से 7.2 water is again going out. वाटर तो 72 ही बचा था ना, उसमें से 72 फिर 7.2 फिर बाहर जाएगा. सो रिमेनिंग वाटर विल बी 72 जो बचा था, उसमें से 7.2 भी चला गया बाहर. सो रिमेनिंग वाटर विल बी 64.8. एंड कितना मिल्क होगा मिक्सचर में? अभी पूरे मिक्सचर में, ये मिक्सचर तो 80 लीटर का होगा. सो 80 माइनस 64.8 विल बी मिल्क. ठीक है. सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. अगर ऐसा हो कि दिस प्रोसेस इज गेटिंग रिपीटेड 4 टाइम्स 5 टाइम्स, so it is difficult to calculate this way. So for that we have one formula ki remaining liquid, how we calculate? Total quantity, or we can say initial quantity, bracket में 1 minus quantity इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, total quantity ब्रैकेट में 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी की पावर n. n is number of times liquid taken out. So this way we can get answer for any number of time if this process is getting repeated. We can see here ki here n is equal to 2. 2 times liquid is going out. 2 times liquid is going out. If we put these things in the formula, what we are getting? Total quantity कितनी है? 80. 1 minus quantity taken out every time 8 liter divided by total quantity n 2. Why 2? Because 2 times liquid is going out. Answer क्या आ जाएगा? 80. This is 1 minus 1 by 10. कितना आ गया? 9 by 10. 9 by 10 into 9 by 10. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64.8. 64.8. ऐसे भी we can get answer. यहाँ पे n is equal to 2 लिखा है ना, तो twice liquid is going out. If this process is taking 3 times, 8 लीटर गया 8 लीटर आया, एक 8 लीटर गया 8 लीटर वापस 2, again 8 liter is going out, 8 liter coming in, 3 4 5 this way. तो n को इस तरीके से we can understand. ठीक है. आउट वाले को, बस आउट वाले को कंसिडर करना है, काउंट करना है. क्लियर? लिख लिया सबने? ठीक है. See this question?
bottle contains 20 liters of liquid A. 4 liters of liquid A is taken out of it and replaced by same quantity of liquid B. Again 4 liter of the mixture is taken out and replaced by same quantity of liquid B. What is the ratio of liquid A to that of liquid B in the final mixture? जैसे final mixture में हमने निकाला था ना, milk water निकाल लिया था 64.8, 80 में से if we subtract 64.8 तो milk की भी quantity आ जाएगी final mixture में. The same way two liquids are given here. Formula also we can apply, and the way we have taken different steps वहाँ से भी लगा सकते हैं. फॉर्मूला लगा के तो वी कैन गेट कि व्हाट इज द क्वांटिटी. कितना आ रहा है आंसर? सी. एनीवन? ए आ रहा है आंसर? ए आ रहा है. सो फॉर्मूला यू अंडरस्टूड कैसे लगाना है? फॉर्मूला लगा के तो आ ही सकता है आराम से. हियर व्हाट इज हैपनिंग कि दिस इज 20 लीटर लिक्विड ए है. इसमें से व्हाट इज हैपनिंग 4 लीटर्स गोइंग आउट. देन 4 liter of liquid B is coming. Again 4 liter is going out. Again 4 liter of B is coming in. यही है. So in the final mixture, what is the ratio of liquid A to liquid B? So किससे start हुआ है? 20 liters of liquid A से. So remaining liquid water से start हुआ था तो water वाला formula था वो. A से it has started, so remaining liquid A will be कितना है total? 20. 1 minus 4 by 20. Process is getting repeated twice. यही लगाना था फॉर्मूला. सो व्हाट वी आर गेटिंग 20 इंटू ये कितना आ गया 1 minus 1/5 4/5 4/5 ये कितना आ गया 64/5 64/5 liters is the remaining liquid. Remaining liquid of A 64/5. So remaining liquid B total तो 20 लीटर ही है. 20 में से
if we subtract 64 by 5, what we are getting? ये कितना आ गया? 36 by 5. रेशियो पूछ रहा है 64 by 5 is to 36 by 5. ये कितना आ गया? 16 is to 9. आ गया आंसर? ऐसा ही करना था? ऐसे ही किया था? कहाँ पे गड़बड़ किया? ऐसा तो नहीं सोचा कि लाइक 8 liter 4 liter of quantity B is coming, again 4 liter B is coming, तो ये तो हो गया इसका 8 liter. ऐसा सोच लिया था? 7.2 कैसे आ रहा था? अच्छा अच्छा, डेसिमल में कर दिया था. ओके ओके ओके. हाँ, ऐसे नहीं करना है, एकदम आखिर में देखना है. नियर बाई वैल्यूज वी कैन गेट. हाँ, एग्जैक्ट भी आ जाएगी. आई मीन जस्ट बाई सीइंग कि क्या होगा आंसर ऑप्शन से. सिंपल है कि मुश्किल है थोड़ा? जस्ट दिस फॉर्मूला ये लगाया, रिमेनिंग लिक्विड ए का. दिस फॉर्मूला यू कैन फॉरगेट इन द एग्जामिनेशन. हो सकता है ऐसा, दिस मे हैपन, बट यू नो कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस, है ना. बट ऐसे करने पे ऐसा हो सकता है दैट you are killing your time, like 1 minute 2 minute 3 minute you are devoting for this question. अगर फॉर्मूला याद है then you can solve. हाँ, तो फिर छोड़ देना है. So thumb rule is this कि art of leaving question in the CSAT paper is very important. तो वो art समझना है कि 1.5 minute से ज़्यादा if you are taking, we need to leave. ठीक है. See this question? This question came in 22. There are two containers X and Y. X contains 100 ml of milk and Y contains 100 ml of water. 20 ml of milk from X is transferred to Y after mixing well. 20 ml of the mixture in Y is transferred back to X. अब इसमें two containers हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में. This way the process is taking place. Then they are asking कि N denotes the proportion of the water in Y. So proportion is basically percentage terms में we can see कि proportion of student in this class, male student in the class, number of male student divided by total number of students, that will call as proportion. तो ratio proportion ये आ रहा है. How? 4 आ रहा है, cannot be determined. We can determine this. क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं. Guess. M greater than N, how you came to this conclusion? So what is M? Proportion of milk in X. Proportion of milk in X. X में तो क्या है? Milk ही है, ज़्यादा ही होगा. Y में क्या है? Water. N denotes the proportion of water in Y. तो Y में तो water भी ज़्यादा ही होगा. तो ये कैसे ज़्यादा होगा? M greater than N. क्यों? कैसे? We can calculate it. ऐसे देख के नहीं लगेगा. We need to calculate. We need to follow some
स्टेप्स, क्या लग रहा है आंसर? बी, m greater than n. Okay, see here, we have two containers, x, y. Anyone is getting this answer? A, intuition. यहाँ देखते हैं, x and y two containers. x में we have 100 ml milk. क्या है यहाँ पे? milk. y में we have 100 ml water. Okay, let's see. We are going to solve it. We'll see. Okay. अच्छा, अभी लोगों के कारण दिख नहीं रहा है ये सर? देखिएगा, लोगों के कारण दिख रहा है ये? किधर है लोगो? टॉप पे है ना? अभी दिख रहा होगा? और नीचे? अब ठीक है? अभी ठीक है? ओके। So we have x, y. x में 100 ml milk, 100 ml water. ठीक है? 20 ml of milk. 20 ml of milk is going minus 20 ml. यहाँ पे प्लस हो जाएगा. We are having 120 ml mixture है. इसमें we have water and milk. What is the ratio? 100 water, 20 milk. ये कितना आ गया? 5:1 का रेशियो. 5:1 का रेशियो. यहाँ पे we are having 80 ml milk. 80 ml milk. Then after mixing well, 20 ml of the mixture in y. यहाँ से 20 ml we are sending here. 80 ml plus 20 ml. अब इस 20 ml में मिल्क कितना है, वाटर कितना है? कैन वी गेट दिस? 20 इंटू 1/6. ये मिल्क की क्वांटिटी हो जाएगी. कितनी हो जाएगी 20 ml में? इस 20 ml में मिल्क कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1/6. 20/6 हो गया. सो इन दिस मिक्सचर वी हैव कितना मिल्क है? 80 प्लस 20/6. ये कितना आ गया? 500/6 ml. सो x में वी हैव 500/6 ml मिल्क. 80 ml तो पहले से था. 20 ml we are getting from here. In this 20 ml 20/6 is milk. क्योंकि इस 20 ml में मिक्सचर है वाटर एंड मिल्क का 5:1 का. तो 20 इंटू 1/6, 20/6. नाउ इन दिस मिक्सचर कितना बचा है y में? y में वी हैव 100 ml लेफ्ट. लेकिन ये मिक्सचर है किसका? वाटर एंड मिल्क का. इसमें वाटर कितना है? रेशियो क्या है? 5:1 का. सो वाटर कितना है? 100 इंटू 5/6. 500/6. सेम आ रहा है. x में वी हैव 500/6 ml मिल्क. y में वी हैव 500/6 ml water. दोनों में सेम आ रहा है. They are asking m and n. m denotes the proportion of milk in x
टोटल कितना है 100, n proportion of water 500/6, टोटल कितना है 100. दिस इज द proportion. दोनों क्या है सेम, दोनों सेम. तो ऐसे क्वेश्चन इट्स लाइक कि 2-3 स्टेप्स में यू आर नॉट गेटिंग आंसर, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये करना है कि छोड़ना है. आसान है क्वेश्चन वैसे, बट स्टिल इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस इन लाइक 1.5 hour के बाद, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट दिस थिंग इन योर माइंड. ईयर 20 बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इधर कितना जाएगा. शुरू में कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज द कॉन्सेप्ट. ऐसे समझ में आया ना व्हाट वी डिड 5:1. ये 20 ml, इसमें भी 5:1 का रेशियो होगा, एंड दिस 20 ml इज गोइंग हियर, उसमें वही 5:1 का रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का. सो वी कैन कैलकुलेट कि व्हाट मिल्क इज कमिंग हियर. 80 ml तो पहले से है, इस 20 ml में कितना मिल्क वी आर गेटिंग. तो इस 20 ml में 5:1 का रेशियो होगा, क्योंकि वी आर टेकिंग दिस 20 ml फ्रॉम दिस मिक्सचर 120 ml. उसमें भी सेम मिक्सचर होगा, तो 20 into 1/6. दिस वे वी कैन गेट आंसर. ठीक है, तो अभी ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर विल स्टार्ट परमुटेशन. एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि वेयर वी कैन अप्लाई एलिगेशन मेथड. ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज क्लियर. अभी चाय पार्टी. एलिगेशन से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट वी कैन अंडरस्टैंड व्हेन वी अप्लाई एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट. whenever we are given cost price, like we are mixing two things and it is given कि cost price इनका ये है, like write down one question, उसी से will understand this concept. In what ratio should Assam tea with cost price 2500 rupee per kg be mixed with Darjeeling tea with the cost price 1500 rupee per kg, so that the cost of the mixture is 2250 rupee per kg. So mixture के questions में whenever it is provided cost price, then we can apply alligation method. And what is this alligation method? Here what is happening? Assam tea and Darjeeling tea, they are mixed together and we are getting some mean price और mixture की price यहाँ पे है 2250. Assam tea का cost price है, we have like 2500. Darjeeling tea cost price 1500. So in what ratio they should be mixed.
सो व्हाट वी डू, बेसिकली वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है. सो 2500 1500 वी आर मिक्सिंग सच ए वे कि दो जो रिजल्टेंट मिक्सचर वी आर गेटिंग उसकी कॉस्ट प्राइस इज कमिंग 2250. तो किस रेशियो में वी आर गोइंग टू मिक्स, तो ये दोनों के बीच की वैल्यू आ रही है 1500 एंड 2500 के बीच की वैल्यू वी आर गेटिंग. सो दिस इज चीपर, दिस इज डियरर क्वांटिटी, दिस इज चीपर. तो जो मीन प्राइस होगी दैट विल बी बिटवीन दीज टू प्राइसेस. ऐसे ही क्वेश्चन होगा. सो इसमें से लाइक दिस इज 2500, इसमें से इफ वी सब्सट्रैक्ट 2250 व्हाट वी आर गेटिंग 250. यहाँ पे इफ वी सब्सट्रैक्ट 2250 में से 1500 750. इन व्हाट रेशियो, दिस रेशियो. ये दार्जिलिंग टी का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, दिस इज फॉर आसाम टी. सो दिस इज लाइक 3:1. 3:1 के रेशियो में वी आर गोइंग टू मिक्स. सो वेन एवर कॉस्ट प्राइस इज गिवन, दिस वे एलिगेशन मेथड वी कैन अप्लाई. जिसके नीचे जो है उस रेशियो में वी नीड टू ऐड दम. अगर क्वेश्चन में इफ इट इज रिटन कि आसाम टी का कॉस्ट प्राइस देन दार्जिलिंग टी का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस विल नॉट राइट. इफ सेलिंग प्राइस इज रिटन वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस इज गिवन सो दे विल प्रोवाइड सम प्रॉफिट इंफॉर्मेशन कि इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है. दिस वे दे विल प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस ही रखना है यहाँ पे. कॉस्ट प्राइस मिक्स कर रहे हैं, वी आर गेटिंग सब मीन वैल्यू. तो सब्सट्रैक्ट करेंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू. छोटी मतलब बोथ प्लेसेस पे लाइक दिस 2500 माइनस दिस माइनस दिस. So this way we are going to apply alligation method. So alligation method when we can apply, when mixtures में cost price is also given, then only we can apply this alligation method. ऐसे mixture से can we get this answer 3:1 वाला? Only by applying the concept of mixtures, ratios and mixtures का concept लगा के can we get this answer? उससे भी मिल जाएगा. बट ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है. सो व्हाट वी डिस्कस्ड, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से मैं बताता हूँ. लाइक द क्वेश्चन इज कि इन व्हाट रेशियो आसाम टी with cost price 2500 rupee per kg, Darjeeling tea with cost price 1500 rupee per kg be mixed so that the cost of the mixture becomes 2250 rupee. किस रेशियो में मिक्स करना है so that we are getting mixture का cost price 2250 rupee. So what we can do, we can write कि आसाम टी दार्जिलिंग टी. Then we can write this mean price or mixture की price. Then we'll subtract numbers. We'll see कि what numbers we are getting. वही ratio, उसी ratio में they are going to get mixed. 3:1. That means this dearer वाली जो tea है, we are going to mix them in more quantity. Why it is happening? क्योंकि 2500 and 1500 cost, this mean price is coming nearer to this. So basic idea is this, इस quantity को ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, इसको कम. If we are adding this more, then this mean price will be lesser than this. ऐसे we can understand this. तो ऐसे alligation method we can apply. ठीक है. If I write another question the same way,
सपोज वी हैव राइस की वन क्वांटिटी, दिस ग्रेड वन, अनदर राइस की क्वालिटी सेकेंड ग्रेड की, कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस राइस इज 500 and cost price of this rice 300. ठीक है, this is per kg, this is per kg. In what ratio they should be mixed so that mixture की cost price becomes 400. So that mixture की price becomes 400 रुपी. ये तो बहुत ही सिंपल है, 1:1, ये तो देख के ही कर सकते हैं, लाइक दिस वे, फर्स्ट सेकेंड 500 300, देन मीन प्राइस 400, यहाँ पे कितना आएगा 100, and here also 100. 100 is to 100, 1:1 के रेशियो में we are going to mix these quantities. ऐसे ही मिक्स करते हैं लोग दुकानों पे. So this way allocation method का application यहाँ पे है, whenever mixture is given and cost price is also provided. Sorry? Like you are saying कि this ratio is given. Cost price is not given of these two. X will assume कि X assume कर लेंगे, तो यहाँ पे 400 minus X, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको will equate आखिर में जो रेशियो दिया हुआ है, this way. अगर जो नहीं दिया उसको will assume X. Like cost price of rice X rupee, this is not given. Grade 2 rice cost price is given 300 per kg and mixture की price is 400 rupee per kg. They are mixed together in 1:1 का ratio में. So what will be the cost price of rice? So one information is again फिर से missing है. So we'll write X 300, then this is 400, so this will come X minus 400. Here we are getting 400 minus 300, 100. 100 is to this value, 500 minus X is equal to 1/1 X. यहाँ पे अगर X we are taking like this way, X 300, 400, then we are getting नहीं, आखिर का रेशियो इज गिवन 1:1. तो दिस वैल्यू विल बिकम X minus 400, this will be 100. So 100 divided by X minus 400 is equal to 1/1. X की वैल्यू आ जाएगी, X minus 400 is equal to 100, तो X की वैल्यू we are going to get 500. So this way we can get कि जो भी पूछा है we can get that value. दोनों वैल्यूज 300 300, दोनों वैल्यू अगर 300 300 है तो एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, तब तो बहुत ही सिंपल हो गया ना क्वेश्चन. देन इट विल बी वेरी सिंपल कि 300 राइस 1, 300 राइस 2, सो दोनों का कॉस्ट प्राइस इज सेम. सो वी कैन सी कि फॉर 2 kg कितना राइस, फर्स्ट क्वांटिटी कितनी आएगी, सेकंड क्वांटिटी कितनी आएगी, किस रेशियो में वी आर मेकिंग दैट वैल्यू वी कैन गेट. 3:2 के रेशियो में है तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी कॉस्ट प्राइस 300 और 300 है 900. तब तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तब तो ये एलिगेशन मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. एंड वी नीड टू
keep this thing in mind कि cost price, we are writing cost price here. If for one value cost price is given, for other value selling price is given, तो for other value cost price we need to calculate. ऐसा नहीं कि यहाँ cost price लिखा, यहाँ पे selling price, then we are subtracting things. दोनों जगह we need to have cost price only. अगर selling price है तो we'll try to calculate कि what is the cost price. Cost price निकाल के then we'll go for this method. ठीक है? Till now no question asked on this topic. So that is a basic idea हमने understand कर लिया कि whenever cost price is included. तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे तीर कमान चलाने हैं यहाँ पे. We are getting answers. Yes. अच्छा, हैप्पी बर्थडे. अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है. कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग खाएंगे, मिलके सेलिब्रेट करेंगे, तालियां भी बजाएंगे. Okay, so this also we discussed. Now we can start permutation and combination. So this is very important. So permutation, combination. Basically, literal meaning is selection and arrangement. तो पहले selection करना है, then arrangement. तो ऐसे ही this is the process. पहले यहाँ भी we need to select things, then we need to arrange them. तो combination का मतलब selecting things, and permutation का मतलब we are selecting as well as arranging. So before going to this permutation and combination, we need to understand what is basic counting. How we do counting. Like NCERT का very classical example we can see here. Classical तो नहीं बोल सकते, but still. A student is having 4 shirts and 3 pants in his cupboard, and he has to wear 1 shirt and 1 pant for going to class. In how many ways he can select them? In how many ways he or she can select them? कितने तरीके से select कर सकता है? Like shirt 1, shirt 2, shirt 3, shirt 4, pant 1, pant 2, pant 3. So सारे कपड़े निकाले, बेड पे रखा. We are having total 7 objects in front of us. So he can wear S1. S1 के साथ he can wear this P1 pant or P2 or P3. 3 ways. 3 ways. Or what he can do? He is wearing shirt 2. Again, shirt 2 के साथ these 3 pants he can wear. Again, 3 ways. Again, for shirt 3 पहना, pant 1, pant 2, pant 3. Again 3 ways. Shirt 4 के साथ भी same condition. Pant 1, pant 2, pant 3. Total 3. Total कितने हो गए? Total 12 ways. Total 12 ways. तो इस तरीके से we count. अब यहाँ पे लिखा था 1 shirt and 1 pant. And वाली कंडीशन थी. यहाँ पे कितने हैं शर्ट? 4.
pant 3 and multiply total 12 ways the student is having to wear one shirt and one pant. Basic counting. इतनी तरीके दिख रहे हैं ना, कोई मिस तो नहीं हो रहा है? We are not getting more number of ways. इतने ही तरीके हैं, इससे कम तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल उल्टा ही आएगा, उल्टे में भी वही आएगा, P1 के साथ 1 2 3 4। तो वही है, पहले पैंट पहन रहे हो कि पहले शर्ट पहन रहे हो, बोथ वे वी आर गोइंग टू गेट 12 नंबर ऑफ वेज। 12 वेज हैं और एंड वाला कॉन्सेप्ट है, तो वी आर मल्टीप्लाइंग। इफ देयर इज अनदर सिनेरियो, again 4 shirt and 3 pant. A student has to wear one shirt or one pant. In how many ways he can have this combination? And की जगह पे अब और लिख दिया हमने, shirt 1 2 3 4 pant 1 2 3. One shirt or one pant he can wear. Shirt 1 पहना, he can go to class. Shirt 2 निकल गए, shirt 3 निकल गए, shirt 4 निकल गए, pant 1 pant 2 pant 3. Total 1 2 3 4 5 6 7 ways. So or means plus 4 plus 3. इसमें लिखा है वन शर्ट और वन पैंट, है ना? उसमें लिखा है वन शर्ट और वन पैंट, वन कॉफी और वन टी, वन समोसा और वन गुलाब जामुन। तो उसमें जस्ट वन वी कैन पिक. सो दिस इज बेसिक काउंटिंग वी कैन से. इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में व्हाट विल ट्राई टू सी, विल ट्राई टू विजुअलाइज कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, हाउ वी आर काउंटिंग थिंग्स. जब तक ये विजुअलाइज नहीं करेंगे विल नॉट अंडरस्टैंड. सपोज वी आर हैविंग 3-4 cities, P Q R S T. ठीक है, we have 5 cities and there are different roads which are joining them. Like P to Q के लिए we have 3 roads. Q to R we have 2 routes. R to S we have 4 routes. P to T we have 3 routes. T to S we have 4 routes. The first question is, in how many ways one can reach S via Q? In how many ways one can reach S via Q? यहाँ पे लिखो from P. P is the starting point. In how many ways one can reach S from P via Q? Second, via T. So you are on your car and you are going from P to S via Q. In how many ways you can reach S? Different routes are there. Different routes, so you can take this route, then this route, then this route. This way
So many options you are having. So how you can reach? How many ways you can take? P to S we need to reach. So we need to reach P to Q first and Q to R and R to S. Can we write and की जगह पे और P to Q or Q to or Q to R? Can we say this? Why? Because P to Q और Q to R, जब तक Q पे नहीं पहुंचोगे तब तक फिर R पे कैसे पहुंचोगे? So these are dependent things. So we can write and only. We need to reach P to Q and Q to R and R to S. So how many ways from P to Q? 3. Q to R, 2 ways. R to S, 4 ways. Total 24. Total 24 ways we can have. अब इसको कैसे visualize करना है? Like we have taken this route, ऊपर वाला. Then we have taken this route. Then we have 4 options. 4 route ये हो गए. Then we have taken the same route. यहाँ पे ये नीचे वाला लिया. Again 4 options. 4, 4, 8. Again we have taken this route. Then this process will get repeated. यहाँ से गए, फिर 4 routes. फिर से 4 ऐड हुआ. फिर यहाँ से यहाँ तक गए. Then we have taken this route. Again 4 route. तो कितना हुआ? एक के साथ यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 into 4, 8. इसके साथ भी 8, इसके साथ भी 8. Total 24 routes we can take. 24 routes we can take. So इसमें we can write this way in mathematical language कि we are starting from P, reaching to Q and Q to R and R to S. Total number of routes 24. The same way, tell me what about this question? If he reaching via T, कितने ways हो जाएंगे? 12. So we need to reach P to T and T to S. How many routes? 3. And multiply T to S, how many routes? 4. Total 12. Then third question, if I write, how many ways one can reach from P to S via Q or via T? आपने क्या बताया था? What answer you have provided? Correct. See here. In how many ways one can reach S via Q or via T? So via Q, how many ways we have? We have already calculated 24. या तो इधर से ऐसे जाए 24 ways. Then or via T, 4 into 3 total. और का मतलब plus. Can we write this way? Via Q and via T. पहले ये और वाला समझ लेना. Via Q और via T. मुश्किल लग रहा है? So this is clear कि P to S via Q, how many ways? This is clear? 24. Via T we have 12 ways. Then the question is how many ways one can reach via Q or via T? कोई पूछे मुझसे कि like 2 रास्ते इधर से,
दो रास्ते इधर से. In how many ways I can reach that destination via this route or this route? 2 plus 2 4. यहाँ पे भी 2 plus मतलब this 2 into 2 भी 4 ही आ रहा है वैसे, लेकिन हम ऐड करेंगे ना वहाँ पे. The basic idea is कि we are adding those routes. Try to understand, try to visualize what is happening here. Via Q we are reaching S. How many routes we are having? 24. इस रास्ते से जा रहे हैं तो we are having 24 routes. If you are going this way, we are having 12 routes. So total routes we are having 36. 36. It cannot be 24 into 12. It cannot be 24 into 12. Why? Because OR is written. And हो सकता है. And cannot be the case. We cannot reach S via Q and via T. Q और T connected है ही नहीं. There is no link between Q and T. अगर Q and T के बीच में रास्ता बना दूं, then there can be a possibility. But Q and T, they are not connected. So total number of routes will be 36. ठीक है? We are having 1, 2 numbers, 2 digits we can say, 1 and 2. With the help of these 2 digits, how many numbers we can form? No condition. We can repeat digits. 1 2, 2 1, 1 1, 2 2. Total 4 such numbers we can form. बस इतने ही बना सकते हैं. If I write 1 1 1, 1 2 1, 1 1 1, how many numbers we can form with the help of these 1 2? Infinite. So answer here is infinite. Infinite numbers we can form. कोई condition नहीं है. ठीक है? But if it is given कि how many two-digit numbers we can form. How many two-digit numbers we can form? Then we have only 4. Only 4. So 2-digit number, so we make boxes this way. 2-digit number, 2 places. At this place, 1, 2 में से कोई भी आ सकता है. So what is the count? 2 digits can come here. 2 digits can come here at this place. 1 2. Count क्या है? 2 ही digits है ना? 2 digits. At this place, also out of these 1 2, any number can come. यहाँ पे count क्या है? 2. And we want to make or form 2-digit number. So both are needed. This place and this place. And total 4 such numbers we can form. Total 4 such numbers we can form. अब देखो इस प्लेस पे out of these 2 numbers anyone can come. फर्स्ट प्लेस पे 2 1 1 2. आ तो यही रहा है ना, either 2 or 1 is coming. Count is 2. At this place also 1 or 2 is coming. यहाँ पे भी count is 2. We are requiring these 2 digits. Both digits are required here. So first and second, 4. Total 4 such numbers.
ये फ्रेश माइंड से वैसे सीखना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा सा देखते हैं, देन नेक्स्ट कल है ना क्लास हमारी, उसमें फिर से आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स, डोंट वरी. इफ आई आस्क यू 1, 2, 3, 4, with the help of these digits, how many one digit number we can form? Only one place? At this place, 1, 2, 3, 4, out of these 4 any can come? 4 such numbers we can form. If I ask ki, how many 2 digit numbers we can form? So at this place 1, 2, 3, 4, count kya hai? 4 such digits can come at this place. At this place also 1, 2, 3, 4 में से कोई एक तो आएगा. क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? कितने डिजिट्स कैन कम एट दिस प्लेस? आउट ऑफ 4 एनी कैन कम. पॉसिबिलिटी है 4 की. वी आर रिक्वायरिंग बोथ दीज डिजिट्स, दिस एंड दिस. कितना आ गया? 16. Then if I ask, हाँ 3 डिजिट हो जाएगा तो 4 into 4 into 4, 4 डिजिट बढ़ाते जाओ. If I ask how many 1 digit number, 2 digit numbers and 3 digit numbers are there? This is the question. Number of pages वाले questions में we have done this. 1 digit number कितने हैं? 0 to 9. कितने हो गए? 10. How many 2 digit number? नंबर ऑफ पेजेस वाले क्वेश्चन में करा था ना ये, कि 10 से 99 तक, 10 से 99 तक वी हैव 2 digit numbers. So how many numbers are there? 99 minus 10 plus 1, मतलब 90 आ जाए total. 90 such numbers are there. But how we can calculate this with the help of permutation? How we can make numbers with the help of what? With the help of these digits. With the help of these digits, we can make any number, be it 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit. We take help from these digits only. अब पूछ रहा है कि 2 digit numbers we need to form. 2 digit numbers. So at this place, till 9, any number can come. 10 numbers can come. Count 10 का है. So 10 possibility we can have at this place. अभी तो first place पे चल रहे हैं ना. At this place, what is the possibility? At this place 0 cannot come. If 0 is coming, we are going to get 1 digit number. So यहाँ पे possibility क्या है? 1 can come, 2, 3, 4 till 9 can come. Total number of possibility here 9, and we are requiring both these digits. Total is 90. आ रहा है ऐसे थोड़ा बहुत? 90 such numbers are there. 90 such numbers are there. Then if I ask 3 digit number, number of pages से we know this, 900 numbers are there. अब इससे we can calculate permutation combinations. At this place, question में ऐसे आता है कि how many numbers we can form. If they are not giving some range, कि with the help of these digits, we can assume कि they are asking कि how many numbers we can form with the help of these digits. क्योंकि यही तो set है
इसी की हेल्प से वी कैन मेक एनी नंबर. So at this place 0 can come 1 2 3 4 till 9. Total 9 possibility we have कि 10. Total 10 possibility. 0 भी आ सकता है यहाँ पे. Total 10 possibility. बस काउंट लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग. काउंट कितना आ रहा है? 10. यहाँ पे 10 can come. At this place 10, but at this place 0 cannot come till 9. कितने हो गए नंबर्स? 900. 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit निकालना है. Then also we can apply this concept कि फर्स्ट प्लेस पे कितने आ सकते हैं, सेकंड पे, थर्ड पे कितने आ सकते हैं, निकाल सकते हैं. वो तो बस इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है. नाउ वी आर डिस्कसिंग कि वी आर रिपीटिंग डिजिट्स. इफ नथिंग इज रिटन दैट मीन्स वी आर repeating the digits. If you are not repeating the digits, digits cannot be repeated, then for that counting is different. So we need to understand कि why we are reducing these numbers. वही तो understand करना है. Suppose we are having 1, 2, 3, 4, 5 and 0 also. With the help of these digits, how many two-digit number we can form? How many two-digit numbers we can form? So two-digit number. At this place, what is the possibility? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of these digits, any can come. Possibility है 6 की. At this place, 0 cannot come. If 0 is coming, तो 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. ये क्या हो जाएंगे? वन डिजिट नंबर. सो वी कैन नॉट टेक दैट. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गई 5. टोटल 30 सच नंबर्स वी कैन मेक. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? If I write कि with the help of this 1, 2, 3, 4, 5, 6, how many two-digit even number we can form? How many two-digit even numbers we can form? Two-digit number के लिए 2 boxes. हाँ. At this place, what is the possibility? At this place, 2 का divisibility rule we can remember. What is 2 का divisibility rule? है ना? Even number के लिए that number must be divisible by 2. उसके लिए क्या है कि last digit must be 0 और multiple of 2. तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? 2 आ सकता है, 4 और 6. Total count is 3. So 3 possibility we can have here. At this place, we can have all the numbers. कितने हैं? 6. 6 into 3, 18. Clear? Then if we are having this way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, how many two-digit odd numbers we can form?
18? 2-digit numbers. What is the possibility here? Odd number है तो 2, 4, 6 तो नहीं आएंगे. Remaining will come. Remaining क्या है? 1, 3, 5. Possibility 3. यहाँ पे all the 6. बहुत ही सिंपल है. Now we'll try to understand repetition वाला concept. Understand करें या फिर अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे लिखो. How many 5-digit prime numbers can be formed अच्छा लेकिन ये तो रिपीटिशन वाला है, अभी रहने दो इसको. Suppose we are having this 1, 2, 3, 4, 5. With the help of these 5 digits, how many 2-digit numbers we can form without repetition? Without repetition of digits. इसके लिए we need to understand, suppose we are having very simple example 1, 2. 2 digits are there. With the help of these two, how many 2-digit numbers we can form without a repetition of digits? 1, 1 we cannot write because 1 is getting repeated. 2, 2 we cannot write because 2 is getting repeated. Two possibilities. So if we are making boxes at this place, 1, 2 में से कोई आ सकता है. Count is 2. But at this place, if 1 is coming, तो 1 cannot come here. If 2 is coming, तो 2 cannot come here. So at this place, 1 digit has already come. तो यहाँ पे जो possibility है, that will not be 2 now. That will be 1 से less हो जाएगी. 2 minus 1, 1. 1 into 2, 2. अब ये लगाना. हाँ आपका तो आ रहा है. So यहाँ पे 2-digit number. At this place, what is the possibility? 1, 2, 3, 4, 5. Out of these 5, any can come. But at this place, repetition is not allowed. So 1 digit has already come at this place. तो यहाँ पे जो possibility है, that will be 1 less हो जाएगी. कोई भी नंबर आ सकता है. 1 आ गया तो 1 नहीं आएगा, 2 आ गया तो 2 नहीं आएगा, 3 आ गया तो 3 नहीं आएगा, 4 आया तो 4 नहीं आएगा. तो every time we can see कि the possibility is -1. तो 5 minus 1, 4. 20. 20. So this way we can get numbers when repetition is allowed. Repetition is not allowed. Now write down this question. एक question और करते हैं, ज़्यादा नहीं. कि how many 5-digit prime numbers we can form? How many 5-digit prime numbers can be formed by using all the digits 1, 2, 3, 4, 5?
1 2 3 4 and 5 without repetition of digits. How many 5-digit prime numbers we can form without repetition of digits? How prime numbers? How we get prime numbers? Sorry, infinite? Prime numbers का तो we don't have any divisibility rule वाला thing. दो ही factor होते हैं. So what can be the answer? How we can approach this question? 5 आएगा? How? Last में 3 है 33. Like we are writing 1 2 3 4 5 3. Last में 3 है तब भी it can get divided by any number. Cannot be determined. क्या आ रहा है आंसर? 0. 0 is the correct answer. How? See, 1 2 3 4 5. How many numbers we can form without a repetition of digits? 5 digits. At this place, possibility we have 5. Out of these 5, any can come. At this place, एक less हो जाएगी possibility. At this place, total कितने हो गए? 120. Total 120 numbers we can form. लेकिन each number में what we can see कि 1 is coming, 2 is coming, 3, 4, 5. These 5 digits are coming in every number. तो 3 का divisibility rule क्या बोलता है? Sum of the digits must be divisible by 3. Sum क्या होगा? 5 plus 4, 9, plus 3, 12, 15 आ रहा है sum. The sum is coming 15 and 15 is divisible by 3. So these 120 numbers which we are making here, sub में these digits will be there or repetition is not allowed. So सारे ही number आएंगे. तो 120 numbers में every time sum of digits will come 15 or 15 is, if sum of digits is divisible by 3, then we can say कि that number is divisible by 3. तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है जो कि प्राइम नंबर है. वी आर गेटिंग मोर देन 2 फैक्टर्स. 3 तो फैक्टर हो जाएगा उसका. दैट मीन्स वी आर गेटिंग 0 सच प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो यहीं पे आज कंक्लूड करते हैं क्लास. टुमारो वी हैव क्लास. उसमें फिर से आई विल रिपीट दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, फिर उसके बाद विल ट्राई टू सी रिपीटिशन वाले में 0 कैसे रोल प्ले करता है.